Letweias. Our first question that is related to Indian polity. Which of the following is not correct with reference to national emergency? Option A is President can proclaim national emergency only after receiving a written recommendation from the cabinet. Option B, emergency can be extended for an indefinite period with approval of Parliament for every 6 months. Option C, resolution approving the proclamation of emergency must be passed by a majority of 2/3 of the total membership of the House. Option D, revocation of national emergency does not require approval of the Parliament. Here you can see these options all are related to the national emergency. So you should have to tell here that which one is not correct. So the President can proclaim national emergency only after receiving a written recommendation from the cabinet. Now let's see about these questions explanation. Its right answer is option C. Under the Article 352, President can declare a national emergency when the security of India or a part of it is threatened by war or external aggression or armed rebellion. The President, however, can proclaim a national emergency only after receiving a written recommendation from the Cabinet. This means that emergency can be declared only on concurrence of the Cabinet and not merely on the advice of the Prime Minister. Hence, here option A is correct explanation related to this question. The proclamation of emergency must be approved by both the houses of the Parliament within 1 month from the date of its proclamation by the President. Once approved by the houses of the Parliament, the emergency continues till 6 months. Here option B is also correct. After completion of 6 months, the emergency can be extended for another 6 months with the approval of both the houses of Parliament. Thus, the emergency can be extended to an indefinite period with an approval of the Parliament for 6 months. This provision for periodical Parliament approval was also added by the 44th Amendment Act of 1978. Before that, the emergency, once approved by the Parliament, could not remain in operation as long as the executive cabinet desired. So what is in this Article 352? इसके अंदर क्या है कि President can declare, President declare कर सकता है national emergency को कभी भी अगर हमारी इंडिया की सिक्योरिटी या फिर कोई भी वार से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आती है, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को इशू कर सकता है. द प्रेसिडेंट हाउएवर प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी. प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकता है अगर उसे रिटन रिकमेंडेशन मिलता है कैबिनेट की तरफ से. Okay, so means that the emergency can be declared only on the concurrence of the cabinet, not merely on the advice of the president, not advice of the prime minister. Okay, so here the cabinet is important rather than the prime minister. The proclamation of emergency must be approved by the both houses of the parliament. Here his explanation wants to say us that the proclamation of emergency है इसको हाउस के मीन्स जो पार्लियामेंट है उसके दोनों हाउसेस के द्वारा ही प्रोक्लेमेशन दिया जाता है, अप्रूवल दिया जाता है फ्रॉम द मंथ ऑफ द डेट इट्स प्रोक्लेमेशन बाय द प्रेसिडेंट. मीन्स अगर ये जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है इसको प्रेसिडेंट के द्वारा इशू किया जाता है तभी 1 मंथ के अंदर जो पार्लियामेंट है हमारी उसके दोनों हाउसेस के द्वारा भी इसको 1 मंथ के अंदर ही इसको अप्रूवल दिया जाता है. वंस अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस, एक बार दोनों हाउसेस से अप्रूवल होने के बाद जो पार्लियामेंट से के द्वारा जो इमरजेंसी है वो 6 मंथ्स तक
कंटिन्यू रहती है। और फिर 6 मंथ्स के कंप्लीट हो जाने के बाद जो इमरजेंसी है हम इसको अनदर 6 मंथ्स के लिए अप्रूवल कर सकते हैं। और इसको अप्रूवल कौन करता है? बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। और फिर ऐसे ही जो इमरजेंसी है उसको एक इनडेफिनिट पीरियड तक हम इसको अप्रूवल कर सकते हैं और इसको हर 6 मंथ के अंदर इसको अप्रूवल देना पड़ता है। दिस प्रोविजन फॉर पीरियडिकली parliamentary approval was also added by the 44th Amendment Act of 1978 और इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1978 के अंदर 44th अमेंडमेंट संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। द इमरजेंसी वंस अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट, एक बार इसको पार्लियामेंट का अप्रूवल मिलने के बाद कुड रिमेन इन ऑपरेशन एज लॉन्ग एज एग्जीक्यूटिव डिजायर्ड, जब तक एग्जीक्यूटिव की डिजायरनेस रहती है तब तक इसको रखा जाता है। Every resolution approving the proclamation of emergency or its continuance must be passed by either house of the parliament by a special majority। और इसका जो continuance है मीन्स जो नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू रखने की जो प्रोसेस है उसको बोथ हाउसेस के द्वारा अप्रूव किया जाता है। कैसे अप्रूव किया जाता है? बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी कैसे है? अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड एक क्या होता है कि मेंबर एक हाउस के अंदर कितने टोटल मेंबर्स है एंड अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। और किसी भी हाउस के अंदर कितने मेंबर टोटल हैं और उनमें से 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट हैं और वो वोट भी कर रहे हैं। Impeachment resolution of the president is one case where a majority of 2/3 of the total membership of the house is required for approval। एक रिजोल्यूशन इम्पीचमेंट का जो रिजोल्यूशन होता है प्रेसिडेंट के लिए उसके अंदर 2/3 की मेजोरिटी इंपॉर्टेंट होती है, मीन्स रिक्वायर्ड होती है अप्रूवल के लिए। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मे बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय अ सब्सिक्वेंट। जो इमरजेंसी है वो प्रेसिडेंट के द्वारा कभी भी रिवोक की जा सकती है। Such a proclamation does not require parliamentary approval। और वो जो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है वो किसी भी पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूवल रिक्वायर नहीं करता। इसी के द्वारा ही ऑप्शन हमारा डी भी करेक्ट होता है और ऑप्शन सी हमारा गलत होता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम और आगे आने वाले ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दैट इज लेटवीआईएस।